Ambrose Paré in 16th century, there is a French surgeon stated that to perform the surgery is to eliminate something which is superfluous, to restore that which has been dislocated, to separate which has been united, and to join which has been divided, and to repair the natural defect of the body. Natural defects, anybody कोई example दे सकता है? People are born with natural defects. Cleft lip and palate, very good. So such things can be only cured by surgical treatment. ठीक है? Surgeons, ऐसा नहीं है कि सर्जरी ये तुम अभी देख रहे हो सर्जरी इसी शेप में थी. The ancient time में what was there? No knowledge of human anatomy, no knowledge of infection, no knowledge of how to prevent infection. There was no knowledge of any instrument. So they inculcated themselves by innovating new instruments, new techniques, and by hit and trial, it is now this stage. So it is not over the मतलब in a night ऐसा सब कुछ नहीं हो गया कि you have come to this side of the surgery. यहाँ पे पहले over the centuries it was like इनिशियली अगर किसी को सर्जरी करने की सोचती थी या करनी पड़ती थी तो क्या करते थे, उसको पेशेंट को उठा के ले गए, रूम में ले गए, नॉट इवन इन द हॉस्पिटल, उसको लिटा दिया, नो एनेस्थीसिया, नो एनी स्टरलाइज्ड मटेरियल, नो ग्लव्स, नथिंग. दे यूज्ड टू विद द सिंपल नाइफ दे यूज्ड टू डू द सर्जरीज. So it was very painful. There were three main obstacles since then, since the infancy until today. It is the three obstacles for the surgery. What are those? Bleeding, pain, and infection. These are the three main enemies to be successful, and which is still today. But with the advancement of the other fields like pain management, कौन करता है? हाँ, anesthesia. Second, bleeding. What do you do if there is bleeding, lot of bleeding? ट्रांसफ्यूजन. तो पहले तो ये भी नहीं पता था कि आप आईवी इंजेक्शन दे सकते हो, फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हो, ब्लड के भी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, ब्लड आल्सो कैन बी रिप्लेस्ड. तो ये भी नहीं मालूम था. सो ओवर द सेंचुरीज ये पता लगा कि हाउ द ब्लड प्रोडक्ट्स कैन बी सप्लीमेंटेड, हाउ द फ्लूइड्स कैन बी सप्लीमेंटेड. एंड थर्ड इज द infection. So there was no idea. They used to think it is a superstitious thing. It is because of some demons. The disease is because of some demons, not because of some bacteria or the microorganism that infection has occurred. They used to think it is because of some demon. ठीक है? तो इसलिए कोई आइडिया ही नहीं था कि how to treat, how to do. So they used to initial stages में how we come to know कि इनको कुछ इन्होंने कुछ over the years किया है. So initially we found the skulls, many skulls with the trephination. Trephination में क्या था कि there were holes in the skull. Why they do it? क्योंकि there was too much of the pain or there was some headache, very much severe headache. So what they do? They did the drill holing of the skull so that मान लो if there is some subdural hematoma, the blood get out and there is a tension decreased inside the head. So pain relieved. So that is how, because of the so many skulls were found, they must have done like this initially. This was the most initial thing. And secondly, then now we are coming to the how it developed. सर्जरी की डेफिनेशन तुम्हें पता चल गई, बट व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस एंड ये इसके कॉज पता चल गए. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी? कैन यू नेम, डिवाइड द सर्जरी in 4 different categories. One is the wound surgery, which is very obvious, and somebody got some laceration, some injury, and anything, or there is any wound because of some blunt injury or whatever. So there is a wound surgery. Second is extirpation surgery. What is that? Removal of what? Tumor, like malignancy. Like if there is a cancer in the breast, so what do you do? Mastectomy, right? If there is problem in the uterus, what do you do? Hysterectomy. If there is a stone in the gallbladder, what do you do? Cholecystectomy. All these surgeries are
extirpation surgeries. Third, reconstructive surgery. What is that? It is mainly involves the plastic surgery, right? What is the reconstruction like? If there is some trauma, the skin is avulsed completely. There is no skin. How will you replace that? By grafting. Okay? Or some flap surgery, right? So this comes under reconstruction. Like initially you must have thought कि who was the father of the surgery in India? Sushruta ना? तो सुश्रुता की क्या सर्जरी फेमस थी? He was the innovator of plastic surgery. क्या? Rhinoplasty, right? So this is also reconstructive surgery. The cleft lip and palate, this is also reconstructive surgery, right? So whatever we reconstruct, lost tissue को हम reconstruct करेंगे उसी के skin से लेकर के, so this is called reconstructive surgery. Then fourth is the transplant surgery. What do you do in transplant surgery? Organ transplant. मान लो somebody has a diseased kidney which has to be removed and replaced by some healthy kidney. So donor will provide the kidney and the recipient will receive the kidney, right? अब ये इनकी detail is the very detail. I am just telling you the what are the different types of surgery. What are the different streams of surgery? ये तो मोटा surgery को हमने 4 में divide कर दिया. तुमको अगर और भी कोई branches पता है surgery की तो बताओ. Urosurgery, right? Cardiothoracic surgery, very good. Gastrointestinal surgery, 3. Orthopedic surgery. Obstetric surgery, gynecological surgery, or pediatric surgery, or neurosurgery, or hepatobiliary surgery, or trauma surgery. These are all different streams of the surgery, and general surgery is the parent surgery, right? सब branches इसी में से निकल के आए हैं. In initial days, all the surgeries were done by the general surgeon, right? So, I mean, in ancient India, the Sushruta, known as the father of the surgery, wrote the Sushruta Samhita as an instruction manual for the physicians on how to treat their patients holistically. The Samhita also mentions various complex surgical methods such as the pedicle grafts, reconstruction of the nose, rhinoplasty. It is the first textbook to suggest that the student of the surgery should learn about the human body by systematically studying the dead body. So this was the first thing who has told us कि firstly what a surgeon needs, a detailed anatomy. One should know about the detailed anatomy of the body. If you don't know about the anatomy of the body, you cannot do surgery. सिर्फ वैसा ही नहीं कि चक्कू चलाना है, आपको पता होना चाहिए where to incise, what to incise, what to cut, what to unite, what are you doing. So अगर आपको knowledge नहीं होगी तो आप कुछ भी करोगे तो it is not going to be successful. So detailed anatomy आपको आनी चाहिए, human anatomy. He talked about the use of the plant fibers and animal hairs for the suturing. Now in the ancient time, the Hippocrates, known as the father of the medicine, advocated for observing the documenting surgical practices and shifting the thoughts that the illness was caused by the natural means and not due to the superstitions. He created the Hippocratic Oath and established the ethics of the medical practice. What is Hippocratic Oath? Good. किसी ने कुछ अच्छा बोला? क्या बोला? किसने बोला? Good. Do not harm. So one is benefit. 4 main pillars हैं. Otherwise तो बड़ी detailed है ये oath. 4 main pillar हैं. Beneficence. पेशेंट को हम बेनिफिट करें, हमारी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, वी शुड मतलब बेनिफिसेंस, पेशेंट का बेनिफिट होना है. सेकंड, नॉन मैलिफिसेंस, नो हार्म टू द पेशेंट. थर्ड, ऑटोनॉमी. ठीक है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या? ही हिमसेल्फ विल टेक द डिसीजन, उसको क्या चाहिए, राइट? मान लो तुम्हें कोई चीज ऑपरेट करनी है तो व्हाट वी टेक? कंसेंट ना. तो कंसेंट लेने के लिए उसको फोर्सफुली कंसेंट नहीं लेनी है. He has to give the consent by the free of his mind. ठीक है ना? ऐसे नहीं कि
तुमने नहीं ये उसको डरा दो इतना, ये नहीं करोगे तुम तो घर तक भी नहीं पहुंचोगे और तुम मर जाओगे और तुम ये हो जाएगा और यह हो जाएगा, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। वो खुद अपने फ्री माइंड से अगर वो इसका डिसीजन लेता है, यस आई एम रेडी टू बी ऑपरेटेड अपॉन, so you can take the consent, right? This is an autonomy. And fourth is justice. कौन ने बोला? Very good. Justice. Justice means whatever you are doing, it should be ethical. Unethical कुछ भी चीज नहीं करोगे। ये नहीं कि आप उसको कहोगे इन्वेस्टिगेशन यहीं से करानी है बिकॉज यू गेट द कमीशन, ये चीज वहीं से करानी है बिकॉज यू वांट मोर मनी। So nothing doing, nothing, no malpractice. ठीक है? So these are the four main pillars of the oath. Then came the Middle Age. Middle Age में in the 13th century the Europe physicians worked. हाँ, तो in the Europe what used to be the practice? The barbers used to be the surgeons because they used to have knife. उनको knife लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी. They had their own knife. So with that knife they used to do वुंड का कोई ट्रीटमेंट कर दिया या फिर कोई आपने एम्पुटेशन कर दिया, लाइक दैट। सो द बार्बर्स अलोन, बार्बर फिजिशियंस वर्कड अलोन द बार्बर्स नोन एज द बार्बर सर्जन टू ट्रीट द वुंड, परफॉर्म एम्पुटेशन, एक्सरसाइज ग्रोथ एंड सेट बोन्स। सो दिस यूज्ड टू बी एंड रियली में इनिशियली later on these barbers and the surgeons they unite and form a society, and later on this was the basis of the Royal Surgeon of Society. ये इनिशियल डेज में ये ऐसे सोसाइटी बनी एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू द रॉयल सर्जन्स ऑफ सोसाइटी इन इंग्लैंड। In 1543 the Andreas Vesalius, known as the father of the modern anatomy, published the De Humani Corporis Fabrica Libri Septum, which accurately depicted the complete structure of the human body with detailed illustrations. Now coming to the 17th to 18th century, what happened then? With more detailed knowledge of the human body, it became easier. Surgery has become easier little. At least ये पता था कि क्या करने जा रहे हैं, हम कहाँ पे करने जा रहे हैं, क्योंकि anatomy is the main landmark की अगर वो पता है आपको तो you can know कि what is disease and what is not disease, किसको निकालना है, क्या करना है. So with the humanoid surgeons began perform more complex operations such as the cataract surgery, excision of tumors, and appendectomy. First appendectomy was done in which year? In 1735. World first successful appendectomy was done, performed by the on the 11-year-old boy, Dr. Claudius Amand. और इसी के लिए इसको amend hernia भी होता है ना? What is that? If the appendix is the part of hernia, it is known as amend hernia after his name, Amand. क्लॉडिस एमेंड। तो क्यों किया था इस बच्चे ने? क्या खा था? पिन खा लिया था। पिन खाने के बाद क्या हुआ? द अपेंडिक्स गॉट परफोरेटेड, सो इट वाज एन इमरजेंसी एंड ही वाज ऑपरेटेड अपॉन एंड appendectomy was done. So it was in the year of 1735. Then early attempts of anesthesia. Now 18th century के अंदर क्या हुआ? द मेजर ब्रेक थ्रू क्या आया? दो या तीन चीजें एक साथ हुई 18th सेंचुरी के उसमें, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी। वन इज ये जो एनेस्थीसिया का फर्स्ट जो हुआ उसका वो इन्वेंशन हुई। फर्स्ट ईथर एनेस्थीसिया वाज गिवन इन 1846 एंड सेकंड थिंग वाज, कोई बता सकता है क्या हुआ था 18th सेंचुरी में? For the first time, the ether was used as an anesthetic, allowing the surgeons pain-free surgeries. The number of operations being performed increased markedly. However, this led to the increase in the number of severity of the surgical infections. In 1867, the Joseph Lister developed an understanding of the bacteria and infectious diseases and applied the theory of the wound sepsis and created the theory of antisepsis. The development of the anesthesia and the antisepsis marked the beginning of modern surgery. उससे पहले जो लिस्टर्स ने तो ये एसोसिएशन निकाला बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द वुंड सेप्सिस, तो बट बैक्टीरिया का जो कॉज था वो किसने निकाला था? एनीबॉडी? थ्योरी ऑफ बैक्टीरिया किसने दी थी? लुईस पास्चर ने, है ना?
तो लुईस पास्चर ने वो दिया, उससे जोसेफ ने निकाला कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द bacteria and the wound sepsis. The cause of sepsis in the wound is bacteria, not the any other superstition. पहले ये लोग सोचते थे कि जो डिजीज है उसी का ही जो कुछ अंदर जो उसी के अंदर से जो सिक्रीशंस निकल रहे हैं उसी के कारण एयर में कुछ जा रहा है, उसी के कारण सब लोग वो हो रहे हैं. It is not thus. It is the bacteria or the microorganisms which lead to the sepsis inside the wound, and that causes the infection. So this was the beginning of the modern surgery. Then in the 20th century, Röntgen discovered of the X-ray, added on the important diagnostic tool for the surgery. इससे पहले तो इतना डायग्नोसिस एक्सरे जब तक आए नहीं थे तो उससे पहले कोई डायग्नोसिस इतना was very difficult. क्लिनिकल डायग्नोसिस था, नॉट द एक्सरे से. जैसे अब सर्जरी में व्हाट आर द कॉमन एक्सरेज विच यू आर going to see and ask for the patient to do? What are the common? पढ़ते रहे हो ना तुम लोग थोड़ा थोड़ा. बताओ. जैसे फ्रैक्चर्स तो हमको पता पड़ ही जाएंगे, एक्सरे से बोन अगर फ्रैक्चर्ड है तो ये हमें मालूम पड़ जाएगा. और क्या हमें मोटा मोटा एक्सरे से पता चल जाता है? इफ देयर इज एनी स्टोन विच इज ओपेक, है ना, तो हमको दिख ही जाएगा वो. और is there any gas under inside the body, inside the abdomen? वो कुछ कैसे कॉज करते पता है? कुछ आइडिया है? अभी तुम लोग अभी पढ़ोगे, आगे पढ़ो. गैस अंडर डायफ्राम. तो ऐसी बिकॉज एक्सरे के इन्वेंशन से क्या हुआ? द डायग्नोसिस बिकम इजी. तो इट हैज अगेन एडेड टू द सर्जरी. अब नाउ 1735 को तो हमने अपेंडिसेक्टमी की. देन 1776 में फर्स्ट कोलोस्टमी वाज डन बाय सर्जन पिलर. अब कोलोस्टमी क्या होती है? नाम सुना है? When you think there is some obstruction to their अपन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स तो पता है सबको, एनाटमी पढ़ के आए हो ना, क्या क्या होते हैं, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है एलिमेंट्री कैनाल? माउथ से, फिर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ड्यूोडेनम, इलियम, फिर ileocecal junction, cecum, then ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anus, right? So if there is any obstruction in the alimentary canal where food cannot be propelled forward, then what will be there? Obstruction, right? अब अगर obstruction हो गया and it is something which cannot be relieved by any drug, then you have to do surgery. In initial days इतना सारा कुछ मेडिसिन में भी नहीं था कि आप कोई दवाई दे दो और क्योर हो जाए obstruction. Or sometimes it is not curable with medicine. You have to operate upon. So what you do, either you cut both the parts of the gut, na, proximal and distal to the obstruction, and unite them, which is known as resection anastomosis. But by that time, in those century, it was not possible this much of surgery. So what they used to do, first कोलोस्टमी कब की थी, उन्होंने लेके उसको, if you take out the gut and you stitch it to the surface of the abdomen, this is known as colostomy. ठीक है? An artificial anus you have created on your body, right? So this is known as colostomy. This was first performed in 1776, and 809 में क्या कहता है? Removal of the ovarian cyst. Then 1846 में first successful operation on gallbladder, open cholecystectomy in 1846. Then early in the 1867 ये Louis Pasteur's theory and wound sepsis की theory जोसेफ लिस्टर ने दी. This is very important, है ना? Then 1881 में क्या हुआ? First time resection of the cancer. कहाँ का कैंसर? पाइलोरस का कैंसर. And the first surgery was performed by Theodore
बिलरॉथ, जो आज भी उसी के नाम से है, बिलरॉथ के नाम से ही है, गैस्ट्रेक्टमी. हाँ, तो थियोडर बिलरॉथ इन 1881. देन इन 1895 देयर इज थॉमस पॉल. उसने क्या किया था, ये कोलोस्टमी, कोलोन सर्जरी पे ही उसने वापस और करा था, एंड वो प्रोसीजर आज भी बोलते हैं पॉल मिकुलिस प्रोसीजर. ठीक है. देन 1964 में इरविंग लाइकनस्टीन, इसने हर्निया की सर्जरी का टेंशन फ्री रिपेयर ऑफ द हर्निया यूजिंग प्रोलीन मैश वाज फर्स्ट डन इन 1964. ये तुम सर्जरी जब आगे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा क्या मैडम उस टाइम बोल रही थी. लाइकनस्टीन रिपेयर फर्स्ट टाइम इन 1964. And 1985 the first lap cholecystectomy, laparoscopic cholecystectomy, which is a very great landmark in the surgery. And now the laparoscopic cholecystectomy is the gold standard for the stones in the gallbladder. Then 2007 में इसी को ही वो तो cholecystectomy की laparoscopy के लिए यूज एंडोस्कोप यूज करके by 4 आपके through 4 small incisions. And 2007 में notes, what is notes? Natural orifice transluminal endoscopic surgery. By natural orifice, either through mouth or through आपका anus or through urethra, you enter into the body and you do surgery. There is no external cut on the surface of the body. Through natural openings, you introduce the endoscope and you do the surgery. This is known as the notes. This was in 2007. So in 20th century, after the invention of the X-rays, the diagnosis becomes very easy, and it was a good tool. In 1901, Carl Landstein discovered the blood types and made the transfusion of the blood safer. तो इसके बाद और ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि हमने बोला ना 3 बड़े एनिमीज थे सर्जरी के, ब्लीडिंग, पेन एंड इन्फेक्शन. तो एनेस्थीसिया का कब हुआ? 1846 में, फर्स्ट ईथर. ठीक है. तो ये हुआ 1901 में आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है. अब इन्फेक्शन वो 1867 में इन्फेक्शन का. अब तब हमको पता लगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द कॉज ऑफ इन्फेक्शन, एंड वुंड सेप्सिस की थ्योरी तब एस्टैब्लिश हुई. देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर द पेनिसिलिन इन 1928, चेंज द सर्जरी एंड मैनेजमेंट ऑफ द इन्फेक्शन. दिस वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. Then between 1930 to 1960, the practice of replenishing body fluids by intravenous fluid was established. Between 1930 to 1960, the use of positive pressure ventilation made thoracic surgeries practical and relatively safer. In 1950, the first organ transplant was performed, giving a kidney to a patient with a renal failure. However, it was later removed due to the graft rejection. In 1953, the first successful open heart procedure was done using the heart lung machine by the John Gibbon at Thomas Jefferson University Hospital in Philadelphia. In 1954, the first successful living donor kidney transplant was performed, in which the donor and recipient were identical twins. In 1967, the first successful transplant was done in Boston. In the same year, the first successful heart transplant was performed in Cape Town, South Africa. In 1980, the Eric Moe performed the first laparoscopic surgery, laparoscopic cholecystectomy. अब क्या है तुम्हारे, ये तुम मान के रखो कि जो तुम्हारे एग्जाम होगा ना सर्जरी का फाइनल, देयर विल बी 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप इन बोथ द सेक्शंस, राइट. तो ये जो वन लाइनर में बोल रही हूँ ना, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे फर्स्ट लेप्रोस्कोपिक cholecystectomy कब हुई, इन विच ईयर, फर्स्ट अपेंडिसेक्टमी कब हुई, इन विच ईयर, है ना, वुंड सेप्सिस की थ्योरी कब आई. तो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स इन द सर्जरी, so you should remember them. In 2000, the FDA approved the Da Vinci robotic system and robotic surgery was born in 2000. Latest is the robotic surgery nowadays, which we are doing. In 2022, at the University of the Maryland, the first transplant of genetically modified pig heart was performed. So this is all the history of the surgery. So after learning from the trials and error and from the research and experiments over the centuries led to the surgery what we see today, very effective and safe. So कहाँ से हम कहाँ तक आ गए? पहले मैंने बताया था ना, पेशेंट को हमने ले गए कहीं पर भी ले गए, किसी रूम में, not even the hospital. On the table
not even the operating table. There was no light like अभी तो operation में light होती है. Have you any one of you have seen the operation theater? Any image of the operation? Yes. क्या क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ. कोई डरने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट तुमने हिम्मत तो करी. गुड. Yes. What is that used for? Yes. Or main function of electric cautery to seal the bleeding vessels, है ना, to burn, to coagulate, right? So electric cautery has both the function to give incision. We give incision with electric cautery also, to cut also and to seal also. Both the functions it does. तो पहले के जमाने में तो नाइफ था, नाइफ से काट लिया, कहीं ब्लीडिंग आई तो क्या करते थे हम, क्या करते थे? स्टेपलर तो अब आया है बेटा, उन सेंचुरीज में तो स्टेपल का तो नाम ही नहीं पता था. स्टेपल तो अब आया है. नहीं, नथिंग टू लाफ अबाउट. पहले क्या करते थे, या तो हम उसको हीमोस्टेट से लेकर क्रश कर देते थे, है ना, या फिर उसको हीमोस्टेट पे लेके एक धागे से उसको टाई कर देते थे. दैट यूज्ड टू बी लिनन. अब बाद में इन्वेंशन हुआ नए सूचर्स का, तो विच इज कैटगट क्या है, एब्जॉर्बेबल सूचर क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर क्या है, तुम पढ़ोगे, अभी सब तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, है ना. तो इन इनिशियल डेज में तो बताया ना उन्होंने कैसे फ्रॉम द हेयर ऑफ द एनिमल के हेयर से या किसी से सूचरिंग उन्होंने सूचरने शुरू करी. ठीक है. So it was the beginning, मैं बता रही हूँ, initially, and now the scene has completely changed. Patient goes into the wheelchair in an immaculated operation theater where there is surgeon standing, which is who is washed and already in the gloves and gown and head and cap, everything. आपका then there is a trolley of the instruments which are all autoclaved, sterilized. ठीक है. And the patient is on the table with the anesthesia machine on the other side of on the head side of the patient, right? The anesthetists are all prepared, right, to anesthetize the patient. So patient is becoming just after prick of the small prick of the infusion line आपकी, उसी में सब anesthesia के drugs देते हैं और माउथ से आपको inhalation करते हो, and within a minute patient is painless, right? So this is a total different scene. And after operation also patient is pain free because of the so many advancement in the pain management. So conclusion क्या है? Surgery has been performed for thousands of years and evolved from the simple rudimentary techniques to the highly sophisticated procedures. Technological advancements continue to shape the field, improve the patient outcome and reduces the recovery time. The history of the surgery reflects the human innovation, trial and error with the pursuit of the only sole aim. What is the sole aim of this? All this is the better health to the patient and better life to the society. This is the only aim. So you have learned from where we have come over the centuries. It didn't happen overnight, है ना, कि सोचा और हो गया, ऐसा नहीं होता. कंटिन्यूस कितने लोगों ने कितनी मेहनत करके, कितने रिसर्चेस करके, कितने एडवांसमेंट्स कर रहे हैं. इन नॉट ओनली इन सर्जरी गो हैंड इन हैंड विद एनेस्थीसिया, विद इन्फेक्शन कंट्रोल, है ना. जो आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंट निकालते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये वाला इन्फेक्शन होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस. तो फिर देन एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक की इन्वेंशन, मेडिसिन वाले, पैथोलॉजी वाले, ये सब मिलके करते हैं. तब हम जाकर के कहीं सर्जन का वर्क इज to diagnose and to operate upon. The other fields are also equally important, right? Everything goes hand in hand. Then only you can successfully treat the patient and make the patient happy. So this was the introduction and the history of the surgery. I hope you understood. Now what about the attendance? कैसे होगी?